Hi everyone, a very warm welcome to Market Pulse with Aditya and Nikita. First of all, you guys can now see that I have got a new mic. So thanks to you that there won't be any audio issues because I also figured out there were some audio issues with my previous mic. So I've got a new mic. So without wasting any time, let's get started. Hi guys, we are coming with a 2-day positional index option selling workshop and it's going to be held on August 24th and 25th, which is Saturday and Sunday. It's going to be a 2 full day program and it's an offline program. And this time we are coming in the city of Delhi. So if at all you are interested, do go through the FAQs that we'll share in the description box. And if you are interested, do register. So what we are trying to do, yesterday you would have seen आदित्य ने पहले ही कहा था, कल ही बताया था उसने, most likely तो inside bar होगा and he had said this high and this low, मतलब this low का put which is roughly 5400 and the high which is 52300, ये वाले call और ये वाले puts zero जाने वाले हैं. And you would have seen despite so much volatility during intraday, it remained an inside bar and whatever yesterday जो fall में spike आया था वो आज सारा decay हुआ था. And Aditya had clearly mentioned that strangles will be rewarded. In fact हमने caption ही वैसा डाला था कि strangles would be rewarded heavily for the next 2 days. आज हम देखते हैं और अच्छे से कि कल के लिए हम कैसे इसको प्लान करें. फर्स्टली आज भी अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी जैसे हमने ये एक रेक्टेंगल थी हमारी और ये रेक्टेंगल को जैसे ही ब्रेक किया था तो कैन यू सी दिस, ये 50 to 200 के आसपास की एक रेजिस्टेंस बन रही थी. मार्केट कल उसके ऊपर जरूर गया था, 300-330 तक गई बट वहां से एक शार्प सेल ऑफ देखी हमने और आज भी मार्केट वापस ऊपर जाने लगी और वापस अगेन शार्प सेल ऑफ देखने मिली. तो टुवर्ड्स द एंड वी आर लुकिंग कि मतलब मार्केट इंट्राडे में तो डे हाई के लिए चली जाती है बट अगेन टुवर्ड्स द एंड इट कम्स नियर टू इट्स लोअर प्राइसेस, मतलब जहां पर ओपन हुई है मोटा मोटी वहीं पर क्लोज होती है. कैन यू सी दिस, ये छोटी छोटी बॉडी ओपन और उस जो है वो बहुत ही पास में है. Now let's go on the 15-minute time frame to discuss. Okay, so our first resistance is 52,000 for tomorrow. Immediate support यही है जो हमारे लिए W का breakout दिया हुआ है, ये वही support है. It roughly works out to 5850 से लेके 51,000 का आप level पकड़ सकते हो इस पे. And these are the major resistances for tomorrow. हमारे लिए कल के लिए ये major resistances दिख रहे हैं. And now what's the theory? Now remember on 31st which is tomorrow, कल शाम को we are going to have Fed की meeting है. Okay, so tomorrow evening we have Fed meeting. Evening means US की टाइम की वो जो मॉर्निंग रहेगी, हमारे यहाँ पर की इवनिंग या लेट नाइट ही होती है. तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उससे पहले कोई बहुत बड़ा डायरेक्शन नहीं ले लेंगे बिकॉज देयर इज एन इवेंट दैट इज लाइंड अप. सो दे बेसिकली वांट टू सी व्हाट हैपेंस इन दैट इवेंट एंड पोस्ट दैट इट विल मेक अ मूव. सिमिलर थिंग आप अगर देखोगे तो बजट की भी पहले जैसे मार्केट बहुत साइडवेज हुआ था और उसके बाद ही बड़ा मूव आया था. तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी ज्यादा कोई मतलब बहुत बड़ी मूव्स हमारे मार्केट में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कल ही पता चलेगा कल क्या है. एंड फॉर दोस ऑफ यू हु यूजुअली कैरी ओवरनाइट पोजीशन, सो प्लीज बीवेयर कि कल शाम को है तो अगर आप लोग निफ्टी के ओवरनाइट पोजीशंस कैरी कर रहे हो या बैंक निफ्टी के तो प्लीज बी केयरफुल एंड जस्ट इफ यू वांट टू अवॉइड इट जस्ट सिंपली अवॉइड इट. सो नाउ व्हाट्स द ट्रेड प्लान फॉर टुमारो? वी विल कीप इट वेरी सिंपल. लेट्स अज्यूम इवन इफ इट ओपन्स फ्लैट, वी विल एटलीस्ट अज्यूम कि 52,000 पे मार्केट माइट टेक सम रेजिस्टेंस. इवन इफ इट फेल्स टू डू सो, यहाँ पर तो पक्का मार्केट रेजिस्टेंस लेने की चांसेस है. और अगर नीचे आती है यहाँ पर ये वाली जोन के आसपास, यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर होते हुए दिख रहा है तो यहाँ पर आप अच्छे और डब्ल्यू लेवल के बाद आपको इफ यू आर गेटिंग अ ब्रेकआउट देन दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग. ओके, तो जस्ट बी वॉचफुल इफ एट ऑल यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ लेवल अराउंड दिस लाइक जैसे वो आ रहा है. अगर नीचे अगर आती है या गैप डाउन से भी खुलती है, मान लो यहाँ से गैप डाउन से भी खुलती है, जस्ट वेट आउट वेदर इट इज डूइंग दिस काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकिंग आउट. जस्ट डोंट शॉर्ट द मार्केट इमीडिएटली ये सोच के कि नहीं ये वाले लोस तो सारे ब्रेक कर दिया. यू हैव टू जस्ट बी माइंडफुल दैट देयर इज अ सपोर्ट also here and plus then there is a very strong support at 5400 to 5500 zones. I am expecting, like we both are expecting these level ka put to go to zero and these calls to go to zero. Although as I said it won't be easier. सिर्फ बताने से नहीं होता है because इसकी जो trade management है वो बहुत different है. Like for example I'll just show you one example. So this is the example that I was referring to. See, this one is a 5400 put, okay, for the month of July and tomorrow yes we have a monthly expiry. So yesterday if you have seen when the market actually opened with the gap and then it started to rally, there was a massive decoy. In fact this was trading somewhere around 13 to 16 rupees. Can you see this sudden spike? Now I'll just show you
the quantum of the spike would be here. So from 13 it goes all the way to 110, and then today it is trading at 13.3. So that's the reason I said it is identifying just those levels that it will go to zero won't make your life easier, that you can't. The idea that I'm trying to drive is you just can't, despite telling you can't copy the same trade, and you're not supposed to do that, because we are here just trying to educate and share our views. So that's what I said. If you're blindly gonna copy, and you're definitely going to pay a very heavy price. So just be aware about this, because these are very common. These today also Fin Nifty spiked very heavily, both on the call as well as on the put side. In fact, that was put side was 2 times it spiked, and towards the end it even spiked, like post 3 p.m. was very horrible. So just be very mindful. That's about for Bank Nifty. Now let's discuss Nifty. Nifty में क्या है, वापस ये इनसाइड बारी है. निफ्टी बाय एनी वेज ये बेरिश अभी भी नहीं है, ये क्लियर बाय ऑन डिप्स में ही चल रहा है. अब इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी बेरिश है. बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज जरूर है. मतलब जो लोग पेयर ट्रेड करते हैं उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इफ यू वांट गो लॉन्ग इन निफ्टी, एंड इफ यू वांट शॉर्ट सम इंडेक्स बिकॉज ऑफ द पेयर ट्रेड, देन बैंक निफ्टी इज अ आइडियल कैंडिडेट फॉर दैट. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पेयर ट्रेड. ऑब्वियसली वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट हियर. एनीवेज, अब चलते हैं निफ्टी की ओर. निफ्टी में what we have seen, it's a clear cut inside bar on the 15-minute time frame. Okay, now coming to Nifty 15-minute chart, what we can clearly see that there is an immediate support somewhere around in the zone of 24,700 to 750, and market is, Nifty is respecting that support quite likely. So on the 15 minutes, what we can see, Nifty is respecting this particular 700 750 zones as its support. So this one is our immediate support. Now remember, in Nifty what has happened, it's basically an inside bar. So if it breaks on the downside, we do have some zone till here, at least till 570 600. This will be a very good level. We need to be just watchful. If at all, this is exactly for those people जिन लोगों को buy on dips करना है. अगर dip आ रही है, आपको सिर्फ long ही जाना है, तो आप dip का वेट कीजिए, और यहाँ पर अगर W formation वगैरह कुछ मिलता है, consolidation के बाद breakout मिलता है, तो अब उस patterns को you can utilize to go long. And if at all you are basically a trader जिनको दोनों साइड का move capture करना है, so all you have to wait कि ये 700 का level break कर दे. अगर 700 का break कर दे तो छोटा सा scalp मिल सकता है somewhere around 650 के आसपास. ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर से रिवर्सल मिले तो यू कैन कैप्चर दैट ऑल्सो. बट आई एम नॉट, मतलब सब लोग इतने वेलवर्स नहीं होते हैं. तो लेट्स सी. सो जस्ट कीप योर आइडिया वेरी मच क्लियर, लाइक वेदर यू वांट टू बाय द डिप और यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. इफ दैट इज द केस, देन आपने मतलब शॉर्टिंग के लिए तो खैर यहाँ पर इतनी अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. आपको शॉर्टिंग के लिए फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो वाले थोड़े से वहां पर थोड़ा सा, जहां पर स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा साइडवेज में है, वहां पर आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पर काफी रेजिस्टेंसेस है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ काफी सपोर्ट्स भी है. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसके अलावा तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये सारा ब्लू स्काई जोन है. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर टुमारो यहाँ पर निफ्टी में जैसे मैंने कहा कि अगर नीचे भी आती है तो ये वाली बहुत ही अच्छी सपोर्ट करके एक्ट करने के चांसेस ज्यादा है. दिस लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट. उसके बाद की तो डेफिनेटली ये वाले जोन्स है ही. तो फॉर टुमारो एज आई सेड, मेरे को यहाँ पर भी बहुत बड़ा मोमेंटम कल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ. द ओनली रीजन इज बिकॉज वी हैव अ फेड पॉलिसी टुमारो नाइट. उसके बाद ही जो भी है मोटा मोटी लोग डायरेक्शनल व्यू ले लेंगे. तो that's about it. Hope you have liked the video, and before finishing the video, I just want to make an announcement that we are actually coming up with a workshop of positional option selling, and this will be in Delhi this time. So anyone who is interested and who are staying nearby can utilize this opportunity. Thank you. Bye bye.